Hello friends, how are you? Once again welcome in RKG Biology tutorial. I hope कि आप लोग स्वस्थ होंगे. In this lecture we are going to discuss about ribosome. Clear? Ribosome also known as RNP particles. RNP particle means ribonucleoprotein particle. Clear? Because ribosomes mainly made up of rRNA and protein. rRNA means ribosomal RNA and protein. Clear? So that's why ribosome also known as RNP particles. See the historical background of the discovery of ribosome. First of all, ribosome isolated from the cytoplasm of the cell by Claude, and he called the ribosome as microsome. सबसे पहले क्लॉडे ने राइबोसोम को आइसोलेट किया फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड ही टर्म्ड द राइबोसोम एज माइक्रोसोम. उन्होंने माइक्रोसोम नाम दिया. लेटर two scientists, that is the Robinson and Brown, they observed the ribosome from root cells of Vicia faba or Vicia faba. रॉबिन्सन और ब्राउन ने रूट सेल ऑफ विकिया फाबा से राइबोसोम को ऑब्जर्व किया. क्लियर? नेक्स्ट, टर्म राइबोसोम गिवन बाय पैलेडे. राइबोसोम टर्म पैलेडे ने दिया एंड दैट्स व्हाई राइबोसोम आल्सो नोन एज पैलेडे ग्रेन्यूल्स और पैलेडे पार्टिकल्स. इसीलिए राइबोसोम को पैलेडे ग्रेन्यूल्स या पैलेडे पार्टिकल्स बोलते हैं बिकॉज द टर्म राइबोसोम गिवन बाय पैलेडे. क्लियर? सी वेयर द राइबोसोम्स प्रेजेंट, that is occurrence of ribosome. So ribosome present in both the type of cells, prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. It is absent in certain eukaryotic cells like the mature mammalian RBC, red blood cells or erythrocytes, and mature sperm. Clear? So mature sperm and mature mammalian RBC don't have ribosome. Clear? Ribosome where present in the cell. So ribosome present in chloroplast, that is a type of plastid. In the stroma of chloroplast, ribosome 70S type ribosome present, and in the matrix of mitochondria also 70S type ribosome present. So the ribosome present in the matrix of mitochondria known as mitoribosome. जो राइबोसोम 70S टाइप राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलता है उसको हम माइटोराइबोसोम बोलते हैं. क्लियर? और जो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है उसको हम प्लास्टिडो राइबोसोम बोलते हैं. क्लियर? सो प्लास्टिडो राइबोसोम in the stroma of chloroplast and mitoribosome in the matrix of mitochondria, and that is the 70S type ribosome. Next, see here. In case of prokaryotic cell, 70S type ribosome present and ribosome freely present in the protoplasm of the prokaryotic cells. So the ribosome present in the prokaryotic cell, they are free ribosome. Clear? And if ribosome bound to any membrane like the nuclear membrane or endoplasmic reticulum, such ribosome known as bound ribosome. So two types of ribosome. One is the bound ribosome, that means ribosome attached on any membrane. For example, endoplasmic reticulum के membrane से अगर ribosome attach है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच है तो ऐसे राइबोसोम को हम बाउंड राइबोसोम बोलते हैं. क्लियर? सपोज लाइक दिस इज द endoplasmic reticulum.
membrane, endoplasmic reticulum membrane. And here the larger subunit of ribosome, this one is the larger subunit of ribosome, attached on the endoplasmic reticulum with the help of a protein, and that protein is known as the, like this is the protein, that is the glycoprotein, and known as the ribofurins. This is a glycoprotein known as ribofurin, and with the help of ribofurin, the larger subunit of ribosome attach on the membrane of endoplasmic reticulum. See here, and the ribosome, if present freely in the cytoplasm of the cell, in case of eukaryotic cell, or in the protoplasm of the prokaryotic cell, so such type of ribosome known as the free ribosome. So free ribosome present in both prokaryotic as well as eukaryotic cell. Clear? And bound ribosome present only in eukaryotic cells. Clear? Next we see origin of ribosome. राइबोसोम कहां से ओरिजिनेट होता है, कहां से प्रोड्यूस होता है? तो इट इज प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस से मेनली प्रोड्यूस होता है राइबोसोम. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम इज साइटोप्लाज्मिक इन ओरिजिन. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल जो है वहीं पे राइबोसोम प्रोड्यूस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लाइक बैक्टीरियल सेल में, माइकोप्लाज्मा सेल में. But in case of eukaryotic cell, ribosome produced from cytoplasmic nucleolar origin. Cytoplasmic means protein कहां पे प्रोड्यूस होगा? साइटोप्लाज्म में. और rRNA that will produce inside the nucleolus. So in eukaryotic cell, the origin of ribosome is cytoplasmic nucleolar, and in prokaryotic cell, origin of ribosome is cytoplasmic. Clear? Next we see the size of ribosome. It is approx 150 angstrom to 250 angstrom in size, in diameter, and ribosome is the smallest cell organelle. जो राइबोसोम है वो सबसे छोटा smallest cell organelle होता है. Clear? Next we see shape of the ribosome. So ribosomes are very minute, granular, non-membranous particles. जो राइबोसोम है वो बहुत ही छोटा, ग्रेन्यूल लाइक, नॉन मेम्ब्रेनस, माइन्यूट, ग्रेन्यूल लाइक, नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल है. ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है. इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन. इट इज द नेक्ड cell organelle. Clear? And it is the smallest cell organelle. See, ribosomes cell organelle within cell organelle. राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है. क्लियर? फॉर एग्जांपल 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनेल which present in another cell organelle. Clear? See the number of ribosome per cell. So it is about 5 lakh ribosome particles per cell approx. Now we see the chemical composition of ribosome. So ribosome mainly made up of rRNA. rRNA means ribosomal RNA and protein. And this protein is basic in nature. Clear? So rRNA and protein together make the ribosome. See, actually two types of ribosomes: 70S type ribosome and 80S type ribosome. 70S type ribosome present in prokaryotic cells and also present in matrix of mitochondria and stroma of chloroplast, and 80S type ribosome present only in eukaryotic cells. Clear?
So what is the ratio of rRNA and protein in 70S type ribosome? 70S type ribosome में rRNA और प्रोटीन का रेशियो 1:1.5:1 होता है. क्लियर? rRNA 1.5 and protein 1. That is the ratio of rRNA and protein in 70S type ribosome. And in 80S type ribosome, the ratio of rRNA and protein is 1:1. Clear? So ribosome mainly made up of rRNA and protein. See, types of ribosomes. So on the basis of sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient means what? Rate of sedimentation. Clear? किस रेट से राइबोसोम पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द 70S टाइप and second one is the 80S type ribosome. And each type of ribosome, whether it is 70S or 80S, they made up of two subunits. One is the smaller subunit and other is the larger subunit in both 70S as well as 80S type ribosome. On the basis of sedimentation coefficient का मतलब क्या कि राइबोसोम पार्टिकल्स, राइबोसोम ग्रेन्यूल्स किस रेट से सेटल डाउन हो रहे हैं उसके बेसिस पे राइबोसोम दो तरह के होते हैं. एक है हमारा 70S टाइप और दूसरा 80S टाइप. और 70S टाइप भी दो सब यूनिट से बना होता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट. और 80S टाइप राइबोसोम भी दो सब यूनिट से बना होता है, स्मॉलर सब यूनिट एंड larger subunit. Clear? See here, what is the meaning of S? S means Swedberg unit or Swedberg constant, and that also refers sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient का मतलब किस रेट से RN, that mean राइबोसोम सेटल डाउन हो रहा है. क्लियर? तो उसके बेसिस पे 70S और 80S है, and that mean S means Swedberg unit or Swedberg coefficient. That means Swedberg constant or Swedberg unit. That is the sedimentation coefficient. Clear? See here, अगर 30S smaller subunit of 70S, that is the 30S, जब सेटल डाउन होगा तो उसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो 30 रहेगा. That's why we say the 30S. और अगर लार्जर सब यूनिट है 70S का, दैट इज द 50S, अगर ये सेपरेटली सेटल डाउन होगा तो इसका जो रेट ऑफ सेटल डाउन है वो कितना है 50. सो दैट इज द रेट ऑफ सेटल डाउन. क्लियर? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. अगर ये दोनों सब यूनिट एक साथ एज अ होल सेटल डाउन हो रहे हैं तो कितने पे सेटल डाउन होंगे? 70 पे. क्लियर? सो 70S, it is not the aggregation or total of the 30S or 50S. Not. 30S means the rate of settle down 30 and 50S the rate of settle down 50. Clear? And when both 30S and 50S means smaller and larger subunit combined and they start to settle down, then they will settle at the rate of 70. Clear? Same case here also in case of 80S. If both 40S and 60S combine and together they are settled down, so they will settle at the rate of 80. If they separately settle down, so smaller subunit of 80S ribosome will settle down at the rate of 40 and larger subunit of 80S ribosome, that is the 60S, will settle down at the rate of 60. So this is the separate rate of settle down, and when both combine and form a single piece, single particle, so they will settle down at the rate of 80. Clear? So on the basis of sedimentation coefficient, two types of ribosome, 70S and 80S, and each type of ribosome having two subunits, smaller and larger. See next, polysome or polyribosome. It means during the protein synthesis,
5 to 6 ribosomes attach on the messenger RNA mRNA and helps in protein synthesis, and this structure considered as the polysome or polyribosome. प्रोटीन सिंथेसिस के समय इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल मैसेंजर आरएनए पे एमआरएनए पे 5 to 6 राइबोसोम्स मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। क्लियर? तो एमआरएनए पे मैसेंजर आरएनए पे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होता है। क्लियर? ओके, so I request to all of you, please subscribe my channel and like, share and comment the videos.